कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहां है? हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी मुबारक हो, अभिनंदन। Yes, sir. Bilkul, sir. Absolutely. This is really wonderful. You know, on the The first thing- 22nd, on the 22nd of December, we released the show on the 23rd. Yes, sir. 23rd of December. गोरेगांव वेस्ट के बिल्कुल पीछे नया नगर है, नया नगर 1। नया नगर 1 नामक स्लम है जहां पर पिछले 40 साल से या 45 साल से बिजली नहीं है, लेकिन जो घोर समस्या थी वहां पर, वी सॉ वी हैड टू गो थ्रू अ माउंटेन ऑफ गार्बेज, a mountain of garbage, I think, which had not been cleaned for years. पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वहां पर असल में गार्बेज क्लीन हो गया है. The BMC has swung into action. Our dear friend, the BMC Commissioner, Mr. IQBAL Singh Chahal, we must congratulate him, has done a wonderful job. He has got the ward officer, he has got the people concerned over there to actually go out and clean the place. हमारे दर्शकों को याद होगा, हमने आपको दिखाया था पूरा कचरे का ढेर. ढेर ही नहीं था, it was a mountain. कचरे का, इट वाज लाइक अ फील्ड. मतलब जैसे गेहूं उगती है या चावल उगता है या कपास उगती है, वहां पर इतना बड़ा कचरे का ढेर था. एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट मिस्टर राजेश आकरे. ऑफ कोर्स ही रिपोर्ट्स टू भाग्यश्री कबासे, हु इज द डीएमसी जोन 7. They actually had it cleaned up, which is amazing, which is, I feel really and truly wonderful about it. And very shortly, 2 दिन के अंदर अंदर वहां पर एक मेडिकल कैंप भी लगने वाला है, जैसा प्रदीप जी ने वहां प्रॉमिस किया था. हमारे दर्शकों को याद होगा, उन्होंने ये कहा था कि यहां पर बीएमसी की हेल्थ टीम जरूर आएगी, एक कैंप जरूर लगाएगी, और डॉक्टर नीतीश ठाकुर के नेतृत्व में थर्सडे मॉर्निंग, बृहस्पतिवार को यहां पर एक कैंप भी लगने वाला है. एज फार एज द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड, that I think the process has already started towards a solution. So congratulations again, Pradeep ji, wonderful. Exactly. Wonderful, sir. I feel great. I feel really and truly great. Ji. We all feel great because it believes that our system works. The BMC system works. The BMC system works because it has got a very proactive leader out there at the top. We've got a municipal commissioner whose ears are open to any kind of suggestions, any kind of improvement, any kind of systematic change within the BMC which has to be enforced. You find that BMC commissioner immediately responds. It has been across Mumbai. We have seen it at the time of COVID, when he reacted, when he had the complete knowledge, he had hands-on knowledge of everything, that how the BMC functions. And during the COVID epidemic, he had right the finger to the last person serving on the last bed where COVID beds are concerned. He knew everything. He knew about the oxygen requirement. He knew about the people. He knew about the kind of trauma center required for treating extreme COVID patients. Each displayed that. But continuously, day after day, whenever any suggestions are made to him, whenever any complaint is made out to him about something that the BMC has to perform, he has entire machinery geared up and everybody works. That's what we call the system. और प्रदीप जी, यहाँ पर मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी. प्रदीप जी, अगर आपको याद होगा, जो पहली वहां से इंफॉर्मेशन आई थी, बीएमसी के लोगों ने जाकर के वहां के जो वार्ड ऑफिसर साहब हैं, उनको यहां तक ये कह दिया कि देयर इज नो एक्सेस टू दैट एरिया, कि वहां पर पहुंच ही नहीं सकते हैं. फिर जो वार्ड ऑफिसर साहब हैं, उन्होंने खुद, आकरे साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया और खुद वो वहां पर पहुंचे, और उन्होंने कहा लिहाजा उनको लोग झूठ बोल रहे थे. इसका मतलब यह है कि जो पहले हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि यहां पर कोई माफिया काम कर रही है, which seems to be true. Sir, there are 2 or 3 things where people, administration and leadership is concerned. IQBAL Chahal in this particular case has portrayed exemplary leadership skills. Exemplary leadership skills that you call, adding on to immediate solutions for problems that affects any section in the BMC. The BMC, whichever you talk about, 227 wards, this man, IQBAL Chahal, has displayed superb leadership skills. Absolutely. Wonderful. Absolutely. And when he moves, the entire machinery works with him. Now, as far as when you said, the local municipal officers saying that we never knew an access road available to NAGAR, that's a joke. Yes. That reflects poorly on the local ward office, that you have not accessed your area, because usually when an officer takes, he goes through the entire ward directory, the map is there before him. But they've done it now. But they've done it now, which is good. They have done it now. It's amazing they've done it now. But
one thing is very sure that whenever there's a problem, they all sprung up. As you said, the health department has come there. Health department, when we had evoked, you talked to the commissioner, we all raised the particular issue. The health department has come back, sprung to action. And when the public from there said that there have been so many deaths because of dengue, malaria, and various other serious diseases. Gee. So now the health department has sprung into action. They are having the health camp, as the local war officer informed you, day after tomorrow, Thursday morning. That again shows that DNC is geared up. And now, if you talk about the garbage that has piled up, and the garbage that was proactively giving this kind of diseases like malaria, dengue, and other kinds of diseases alone, that is probably because of garbage. You got about 400 trucks of garbage filled out there. That's right. It will take a long time to carry out. It will take a long time, and it's going to take a lot of JCPs, it's going to take a lot of trucks. And I tell you what, I tell you what, Pradeep ji, I tell you what, let's take a look. Let's take a look at what we saw on the 22nd. Let's take a look at that first. ये जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये after the cleanup है और cleanup अभी भी जारी है. ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, cleanup अभी भी जारी है. But I must congratulate the BMC for prompt action. Mr. Akre, you've done a wonderful job. Again, thank you very much, Mr. IQBAL CHAHAL. We're really proud of you for the fact that you are our BMC commissioner. Let's take a look at what we saw on the 22nd. लोगों ने वहां पर क्या कहा, किस प्रकार लोग वहां पे परेशान थे, बेचारे तड़प रहे थे. Let's take a look at that. मैंने कहा बच्चा मर गया यहाँ पर, खबर बहुत सुनी है, ऊपर से गिर के नीचे मरा अंधेरे के अंदर। बिजली चाहिए कि नहीं? अंधेरे की वजह से मरा है यहाँ पर। लाइट के एक बच्चा सीढ़ी बिजली चाहिए। गिर के मरा है भाई साहब। 8 महीने का बच्चा ये गली के अंदर, इस गली में रात रात मच्छरों में बैठना पड़ता है सर हम लोगों को। हम लोग आए तो लाइट गई, तो हमें भागना चाहिए यहाँ से एकदम फौरन, ताकि लाइट आ जाए वापस. यानी यहाँ जो एक माफिया ऑपरेट कर रहे थे, अभी भी आप देख लीजिए लाइट है ही नहीं हमारे घरों के अंदर, आप चल के देखिए। Right, and over here, Pradeep ji, the BMC ward officer, he actually said कि भाई हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बिजली को लेकर के, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर को ऑब्जेक्शन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन है, बिकॉज दिस इज सपोज्ड टू बी मैंग्रोव लैंड. यहाँ पर मैंग्रोव्स, लेट मी पुट इट टू यू, थे एक जमाने में, थे मैंग्रोव्स थे यहाँ पे, आजकल नहीं है, लेकिन फिर भी the BMC says they will go out of their way to try and convince everybody that it is the right of every person living in Mumbai for electricity. And I think that's wonderful. हर एक को बिजली मिलनी चाहिए. BMC ने भी कहा कि वो पूरे तरीके से सहयोग करेंगे यहाँ के लोगों का. And I think that's absolutely wonderful. Pradeep ji. So one thing is there that the BMC has reacted immediately. Now you talk about the commissioner, BMC commissioner IQBAL CHAHAL, such a proactive commissioner if you see in the last few decades. We had, I think, one Mr. Ranganathan, whom the media was very media friendly, and his also action was immediate and proactive. Yes. If any complaint across Mumbai, any ward comes to him that garbage has not been collected, or this has not been done, or there has been shortage, deficiency of services, his reaction was immediate. His mail, his fax, whatever at that particular time the communication was, it is to go straight to the ward officer and immediate, without any rest time, that you stay in this file reserve table and then it moves. No. As soon as the complaint from the residents come of Mumbai, immediately it is dispatched to the concerned local BMC ward officer for immediate action. I tell you what, let's take a look. Let's say, Pradeep ji, this is absolutely fine. Our viewers would remember from in Mumbai, Mr. Ranganathan used to be BMC commissioner, and he was a wonderful BMC commissioner. और उसके बाद जाकर के वो chief secretary भी बने, and he was really wonderful. He was one man who was completely and totally proactive. Mr. IQBAL CHAHAL reminds me of him, but in a far more dynamic and energetic manner. Mr. Ranganathan used to be slightly reserved. IQBAL CHAHAL साहब का जहाँ तक सवाल है, वो फौरन वो एक्शन लेते हैं. लेकिन उस वक्त अगर आपको याद होगा, उस वक्त ये व्हाट्सएप नहीं होता था, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं होता था, और कम्युनिकेशन इमीडिएटली फैक्स भेजता था लोकल जी, दुरुस्त बात, और एक्शन भी होता था. और इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, उसके बाद हमारे बड़े अच्छे मित्र करुण श्रीवास्तव साहब भी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, ऐसी बात नहीं है. बट लेट्स टेक अ लुक. Here we are, both Pradeep ji and I, requesting Mr. IQBAL Singh CHAHAL for action. And I tell you what, he has taken action.
Now, this is the 22nd of December. This is what we said to Mr. इकबाल चहल कि साहब यहाँ पर जरा एक्शन लीजिए, बहुत जरूरत है लोगों को. Let's take a look. बिजली मिलनी चाहिए प्रदीप जी, किसी भी हालत में बिजली चाहिए. दूसरा एक जो उन्होंने कहा कि बीमारी है इस प्रकार से, The BMC has to come here now. इमीडिएटली आज के आज या कल के कल कुछ होना चाहिए. So what we'll do is, बिकॉज कितने लोग ग्रसित है, फिर भी एक थोड़ा एक दवाखाने में जाएंगे सर, दूसरे दवाखाने में भगाते हैं. पूरा बस्ती में तकलीफ है. अरे एक दवाखाने में भागेंगे सर, ये लोग बोलते हैं सिद्धार्थ में मत जाओ, टोपी वाले में जाओ. 25 लोग अफेक्टेड है. बच्चे ज्यादा ही है, बस तुम आगे देखो. 50 लोग. ये लोग बच्चा मेरे गोद में 150 अभी बीमार है वो. 50 लोग अफेक्टेड है. बच्चे ज्यादा 50 से ज्यादा. so which means we are looking at about 150 kids. 100, 150. लाइट की वजह So से it's an emergency. आपसे क्या कह रही हूँ? लाइट की वजह से कैंडिडेट बच्चा था वो भी खत्म हो गया यहाँ पर. 25% बच्चे ठीक से होंगे, लेकिन 75% बच्चे बीमार पड़ रहे हैं. वो लड़का भी अभी बीमार है, It's like an epidemic. लेकिन लाइट नहीं दे रही है लोग. BMC health department has to come here immediately. Mr. इकबाल चहल, Yes, yes. कमिश्नर साहब, सुन लीजिए, you have to come here now. You have to send your emergency team now. कमिश्नर साहब, आपको यहाँ आना पड़ेगा. You have to come here now, and he did. Once again, I must thank Mr. इकबाल सिंह चहल. We requested him. इकबाल सिंह चहल साहब को हमने रिक्वेस्ट करी कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, और ये सजेशन प्रदीप जी का था. उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो ये तो बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत बड़ी हेल्थ को लेकर के, सेहत को लेकर के समस्या हो सकती है, बहुत बड़ा एपिडेमिक यहाँ पे शुरू हो सकता है, जो हो सकता है आगे जाकर के, क्योंकि कोविड एक बार फिर अपना सर उठा रहा है. हो सकता है कि कोविड को लेकर के ये समस्या नियंत्रण से बाहर हो जाए. इसलिए प्रदीप जी ने भी उस वक्त कहा कि इकबाल सिंह चहल साहब को यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और उन्होंने हस्तक्षेप किया, जिसके लिए मैं एक बार फिर उनको धन्यवाद करता हूँ. दिस इज रियली एंड ट्रूली वंडरफुल. द वार्ड ऑफिसर एक्चुअली टुक एक्शन आफ्टर इंटरवेंशन from the BMC commissioner himself, Mr. Chandrasekhar Khore, Mr. Iqbal Singh Chahal, and of course Mr. Akre. You've done a wonderful job, absolutely wonderful job, and I'm really proud of the fact that the BMC has become so proactive. But more than that, I'm really proud of the team and Nation Now. नेशन नाउ की टीम ने जिस प्रकार इसको फॉलो अप किया, बार बार बीएमसी से संपर्क किया, बार बार वार्ड ऑफिसर से बात करी, बार लगातार बीएमसी कमिश्नर साहब को ब्रीफिंग देते रहे. I think this is really and truly a wonderful job. Pradeep ji. Sir, one thing is that the system works. BMC has displayed it time and again. Whenever anybody has. Now, does BMC have the resources? Yes, it has got the resources. Does BMC have the manpower to take on such a task? Yes. Yes, it has the manpower. Is it widespread? Yes, it is widespread. The whole Mumbai has been so efficiently bifurcated, differentiated, and divided in wards. And every ward, you've got so many departments. To building proposal, health department, maintenance, Conservancy, conservancy, storm water drain, so solid waste management. You got everything in place. Actually, all you need to do is press the right buttons. Now, one thing you have to talk about: the bureaucrats are functioning. The bureaucrats, when you bring the program, are functioning. Now, I need to know, you need to know, the whole Mumbai needs to know what were the elected representatives doing there. Yes. Why has it taken so much time? Why has it taken so much time for the elected representatives to respond in such a particular manner? And they've done nothing. They've done nothing. If we find that this kind of thing has not happened, if the local corporator has not highlighted to the BMC that this area, there is no light since here, and the garbage is there piled since years. For years. So what was the local corporator doing? What is the local corporator doing? What is the MLA doing? What is the member of parliament doing? Local MLA doing, and what is the member of parliament, Mr. Gajanan Kirtikar, do? You got Mrs. Pillai, the corporator, who's from BJP. You got Vidya Thakur, the MLA, who's also from BJP. BJP, and Gajanan Kirtikar is from the Balasaheb Shiv Sena. Shiv Sena, which is a part of the BJP in the center, as an MP. Why have they failed in their duties? Absolutely. And Pradeep ji, over here, question arises, ये बात तो गार्बेज की रही, चलिए गार्बेज तो उठ गया, उसके बाद अभी हेल्थ कैंप भी लग जाएगा. But my point is, this has to be followed up. Mr. Rajiv Bajaj and his team to go out there, highlight the problem,
Mumbai, one of the best places in the world. Mumbai, the financial capital of India. And then in one place of Mumbai, you have 40 years, there is no light. There is no electricity. There is no light, there is no electricity. As Advocate Pradeep Nambiar ji said just now, what were these people doing for 40 years? 40 साल तक ये लोग क्या कर रहे थे? Let's take a look. Pradeep ji, let's take a look at what the people over there have to say. 40 बरस से वहां पर बिजली नहीं है. I mean, this is terrible. When Advocate Pradeep Nambiar ji and I reached over there, we were shocked ourselves. You know, when we went over there, I didn't believe it. मुझे ऐसा लगा या 3 या 4 साल की कोई प्रॉब्लम होगी या 1 साल की कोई प्रॉब्लम हो गई. 40 बरस से यहां पर बिजली नहीं है. Let's take a look. तो ये साइड और ये पर एक बच्चा मर ये गया। अरे लाइट नहीं है, एक बच्चा मर भी गया है यहाँ पर। सबके घर में 8 महीने का बच्चा मर गया है यहाँ पर। तो फिर बहुत सुनी रहे। ऊपर से गिर के नीचे मरा है अंधेरे अरे के बिजली अंदर। चाहिए कि नहीं? अंधेरे की वजह से मरा है यहाँ पर। बगैर लाइट के एक बच्चा सीढ़ी बिजली चाहिए। गिर के मरा है भाई साहब। 8 महीने का 8 महीने का बच्चा ये गली के अंदर, इस गली में। रात रात मच्छरों में बैठना पड़ता है सर हम लोगों को। हम लोग आए तो लाइट गई, तो हमें भागना चाहिए यहाँ से एकदम फौरन, ताकि लाइट आ जाए वापस। यानी यहाँ जो एक माफिया ऑपरेट कर रहे थे, अभी भी उनको आप डर देख लगा। लीजिए, लाइट है ही नहीं हमारे घरों के अंदर। आप चल के देखिए। Let me take a look again. Let's take a look at something more. Let's take a look at a few other things that the people over there had to say. I think you saw this thing earlier, but let's take a look again at what the people over there had to say. मैं जान करके आपको बार-बार दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और मुंबई शहर में 21वीं सदी में 2022 खत्म होने को आ रहा है। 5 या 6 दिन के अंदर 2023 शुरू हो जाएगा और लोग इस नरक में रह रहे हैं मुंबई शहर में। लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पर एक हफ्ते में चलिए सबको न्यू ईयर गिफ्ट दीजिए ना, बिजली पहुंचा दीजिए सबको 31 दिसंबर तक, प्लीज प्लीज। दिस इज टेरेबल, व्हाट वी आर डूइंग इज ऑफुल, दिस इज एब्सोल्युटली एक टेरेबल। बहुत बड़ा एक चीज है कि करप्शन लगता है, एक सिंडिकेट यहाँ पर है। आपको बहुत काम करना पड़ेगा सिंडिकेट, आपको बहुत काम करना पड़ेगा सर, इस सिंडिकेट इतनी जल्दी नहीं होने वाला खत्म ये गरीब लोग से 25-25 हजार लेने वाला जो सिंडिकेट है वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर राइट हो। तो इस सिंडिकेट को तोड़ना आपको बहुत जरूरी है, मेहनत करना पड़ेगा। बिकॉज आप सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में बोल रहे कि 20 साल से संघर्ष चालू है, इस व्यक्ति का बेचारे सबको साथ देना पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा। जितने लोग रहते हैं ना, सब घर काम करने वाली औरतें हैं। उसमें भी 25-25 हजार रुपए इंसान कहाँ से देगा? 25,000 पेमेंट नहीं है। हाँ, 10,000 इंसान देगा, 50 काम करवा लेते हो लोग। हाँ, तो कहाँ से ला रहा सर 25,000 रुपए? आपको कह रहा है कि 25 आपको देना पड़ेगा, नहीं आपको 2,000 जो उनका फीस है वही देना पड़ेगा। और वो भी सुन लीजिए, वो 2,500 जो आप देंगे ना, आपके पहला जो बिजली का बिल आएगा उसमें से काटा जाएगा और नहीं देना पड़ेगा, याद रख लीजिए। Pradeep ji, let's not forget. It'll be really an injustice if we forget the gentleman, the 93-year-old gentleman who's still fighting. 93 साल के हैं और आज तक लड़ रहे हैं। जबरदस्त, मतलब hats off to him. For the last, he's 93 years old and he's been fighting since 1972. 50 साल से वो लड़ रहे हैं इसी जगह के लिए, जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए। प्रदीप जी। Sir, once we have the people who are ready to for sacrifices. Now he has been making files, approaching various administration, various authorities, various enforcement agencies to see that light comes, agencies like ADANI to see that light comes. But 40 years, we got people who are working hard, selflessly, dedicated. On one person, they are the affected people, as you say, the preamble, we the people, the country, the constitution, the whole country works for we the people. And we find we the people have not got their rights in 40 years. That's right. 40 years are taken for the people to get, and even now they are. Now, when we talk about elected representatives, Gadan Kirtikar, MP under oath says, I am here to serve the people. I am here to serve the constitution. That's right. Nothing happening. The forest department comes under the center, and this is second term probably from the same area. You could have very well called all the particular concerned connected departments, had a meeting and said light is a fundamental duty of a person to receive it, and it's a fundamental duty of the state to give it. Yes. As Mr. Modi, and you reminded the people, you reminded everybody in this country that Narendra Modi, the Prime Minister, has been working 24/7, 365 days to see that the basic facilities
necessary for every person on this country are received. When he said toilets, he tried to give toilets to every house. He made a appeal where cleanliness is concerned. Har Ghar Mein Nal was his campaign to see that every water, the pure drinking और water, नल से जल और नल में जल नल में जल हर घर में, and then light, electricity. He said absolutely. और बिजली, हर घर में बिजली, हर घर में बिजली, ये हर चीज. So the basic, the fundamental needs of the people जी बिल्कुल is not only guaranteed in the constitution, but the Prime Minister has gone 10 steps ahead to see that these things happen. He has toiled day and night. He has toiled every 24, 365 days. All since तो प्रदीप जी आपको लगता नहीं है, प्रदीप जी आपको लगता नहीं है, आपसे एक सवाल पूछता हूं. Let me ask you. Hang on a minute. Let me ask you. आपको प्रदीप जी लगता नहीं है कि ये जितने भी लोग यहां पर इन्वॉल्व हैं, सम्मिलित हैं, इन लोगों को बिजली से वंचित रखने के लिए, इन लोगों को क्लीनलीनेस से, स्वच्छता से वंचित रखने के लिए, इन लोगों को हेल्थ कैंप और मेडिकल फैसिलिटी से वंचित रखने के लिए, ताकि इनके पास जितना छोटा मोटा कुछ भी पैसा वैसा है वो इनसे लूट लिया जाए, आपको लगता नहीं है कि ये लोग काम कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के और दुश्मन बने? कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी. Exactly, sir. ये प्राइम मिनिस्टर जो झाड़ू लेके लोगों के सामने जाता है कि मैं खुद स्वच्छता प्रोपोज करता हूं, मैं स्वच्छता प्रोपोगेट करता हूं, जहां कचरा है कचरा को हटाइए, ये मैं झाड़ू मैं खुद लगा रहा हूं, आप भी लगाइए. टॉयलेट मैं चाहता हूं हर घर में रहे, टॉयलेट के लिए मैं लड़ रहा हूं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री बन चुका हूं तो आई एम नॉट. मैं चाहता हूं कि हर घर में टॉयलेट हो, हर घर में पानी हो. नाउ the Prime Minister at a national level, but what are his representatives doing? That is more important. आप ये देखिए जो elected representatives उसी state के नहीं, उस ward के कहाँ पर है, क्या काम कर रहा है? What were they doing in the past? अभी 2000 last was 2019, so continuous चल रहा है. They were doing nothing. They have done nothing. Unless and until, let me make an allegation here. Unless and until they were also shareholders in this mafia. Now let's take a look at what the people have had to say, because as Pradeep ji pointed out over there कि भाई एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरना पड़ता है, एक एफिडेविट देना पड़ता है कि भाई ये मीटर जो है ये मेरी जिम्मेवारी पर आप यहां पर लगा रहे हैं, इसको अगर कुछ डैमेज होगा, कुछ नुकसान होगा, उसकी भरपाई मैं करूंगा. सिर्फ यही करना पड़ता है और आपका मीटर लग जाता है. और यहां पर बिजली से वंचित रखा जा रहा है मुंबई शहर में लोगों को. लेट्स टेक अ लुक. Mr. Vichare has already committed. Yes, sir. ये लाइव जा चुका है, टीवी पे दिख चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, और हर रोज दिखेगा. अब ये याद रख लीजिए विचारे साहब. आपने एक मिनट और एक मिनट शांति. एक मिनट. आपने कमिटमेंट दिए कि अगले 4-5 दिन में बिजली आ जाएगी. 4-5 नहीं, कुछ ही दिनों में. कुछ दिन मतलब कितने हैं? 2022 या 2023? 2022 में 10 दिन बचे. देखो 2023 के अंदर यहाँ पे बिजली आ जाएगी. जनवरी, फरवरी, देखो ऐसा है ना साहब, मार्च. तो उसका भी जवाब देता हूँ. अदानी क्या बोलती है कि 50-50 घर को हम लोग बिजली देंगे, लेकिन 50-50 घर में कौन कितना बिजली यूज कर रहा है और उसका कितना बिल हम लोग लेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? अरे घर में मीटर होना चाहिए अलग. हाँ, तो हमारी डिमांड उनसे यही है कि इंडिविजुअल घर को भले वो टेम्पररी बेस, आपको इंडिविजुअल घर पे आप यहाँ पे मीटर दो, हम लोग आपको एफिडेविट लिख के देने के लिए तैयार है. तो ये साइड और ये जी, हर एक कोई एफिडेविट देने को तैयार है, हर एक कोई राइटिंग में देने को तैयार है, लिखित में देने को तैयार है कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है और इसकी पेमेंट वगैरह हम सबको जो कुछ भी आएगा, बिल आएगा, हम लोग करेंगे. मेरा ये कहना है प्रदीप जी, नाउ देयर आर 2 थिंग्स हियर. नंबर 1, थर्सडे को हेल्थ कैंप, स्वच्छता अभियान, दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी. लेकिन जो बड़ी समस्या है बिजली की, वो अभी तक ज्यों की त्यों कायम है. Agreed. I am very happy that finally some action has taken place with regard to garbage removal. I agree, we are very happy that some action has taken place with regard to a health camp where all the kids over there, all those allegedly and reportedly suffering from dengue, malaria and other diseases, they are going to be checked. And there is also going to be an immunization campaign. Very good, wonderful.
But all that I'm saying is, the elephant in the room, electricity for that area, when will that come? Now that's a question that we really and truly have to ponder over, where the forest department will have to grant permission, because after all, there are no mangroves here. There are no mangroves here as far as this particular place is concerned. And as you can see, the garbage is piled up on one side, certainly, and it has been piled up on one side only so that the trucks, BMC trucks can come in, pick it up and take it away. ये गार्बेज जो है, ये कचरा जो है, इसलिए आपको दिख रहा है साइड में, ताकि ट्रक्स आ सकें और इसको उठा के लेके जा सकें. याद रखें, सालों साल ये कचरा नहीं उठाया गया है. एंड आई मस्ट थैंक मिस्टर इकबाल सिंह चहल अगेन, बीएमसी कमिश्नर. जनाब, जबरदस्त काम किया है आपने. मिस्टर आकरे, आपने जबरदस्त काम किया. द एंटायर बीएमसी ओवर देयर, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, all the law staff and everybody else of the BMC has come together to see to it that finally these people feel that they are part of Mumbai. कि ये भी मुंबई के नागरिक हैं. They are also shareholders in the progress of Mumbai. मुंबई की तरक्की में, मुंबई में जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट हर जगह पर हो रही है, वहाँ पर इनका भी कुछ शेयर है, इनका भी कुछ हिस्सा बनता है. मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख करके, very frankly speaking. Sir, the Prime Minister of this country has got great dreams for this 1.4 billion people. The State Chief Minister, Mr. Eknath Shinde, Dev Fadnavis have got fantastic plans for this country. Right. You got the bureaucracy showing how efficient it is. He said, you show us the problems and we've got the plans in place. We've got the manpower in place. We've got the resources in place. Bureaucrat, our commissioners displayed great leadership skills. Wherever in Mumbai there is some problem with BMC, he has sprung into action. So we've got all this in place. We've got plans in place. We've got leadership in place. We've got national leadership in place, state leadership in place. But what has failed us today? Just a minute. I'd like to make a correction here. I'd like to make a correction here. Just a small correction. On the header, you saw, ward officer cleans up 2 years. It's 2-year garbage. Not just 2 years. It's a 2 years of garbage which was piled up over there has just been cleaned up by Mr. Akre. That's what it means. Ji, Pradeep ji, please continue. Because, so what I was saying that our leadership is absolutely clear in the center, in the state, everywhere. The leadership is absolutely clear that we are with the people. We've got great dreams for the people. We want to do great things for the society. We got the state level, the central level, and the municipal levels, people out there. But who has failed us is our local politicians, the local elected bodies, the local elected leaders have failed the dreams and aspirations of the Prime Minister, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister. So what is it? What stops these people from performing? And probably every political party has to grade these politicians. That's right. So that next time, should they get tickets or not tickets? Because in Mumbai, in a place like Mumbai, where the Prime Minister has a dream that every small village will be clean, will be electrified, will have water, will have sanitation. When the Prime Minister has such dreams and is fulfilling that even to the smallest village, the smallest panchayat, the smallest house in every smallest village, if he has great dreams, why has this great act of omission takes place in Mumbai? Now that's terrible. That's disgraceful. That's surprising, disgraceful. It reflects on the politicians. And here I must say something else. I know I'm on a self-congratulatory spree, but now and then one must congratulate oneself too. प्रदीप जी, मुझे एक बात से बड़ी खुशी है, जहां पर सब लोग, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े चैनल्स हैं, ऑल द कॉर्पोरेट चैनल्स, सब लोग बात कर रहे हैं किसने किसको क्या कहा, किसने किसको गाली दी, किसने किसकी बेइज्जती करी, किसने किसी का क्या कहा, जिसकी वजह से ना जाने आंदोलन शुरू हो गया, रास्ता रोको शुरू हो गया, ना जाने क्या कुछ हो गया. हम अकेले हैं अभी तक तो. मैं उम्मीद करता हूं बाकी सब लोग भी आ जाएंगे. हम अकेले हैं जो उन विषयों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे लोगों का सीधा साधा संबंध है. इससे सीधा साधा संबंध लोगों का है. मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े चैनल हैं, who have huge resources at their disposal, perhaps they should also look at what the people are doing and how the people are suffering. Perhaps. But once again, BMC Commissioner Iqbal Chahal Sahab, congratulations to you and to your entire team. Thank you very much, sir, for listening to us and for taking prompt action. From the entire team at Nation Now, thank you so much. Pradeep ji, and from Pradeep ji and myself,
That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.